हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लिटरेरी ट्यूटोरियल बाय अनीशा मंगला। आज का हमारा जो टॉपिक है वो एलिगरी के ऊपर है। इट इज अ लिटरेरी टर्म विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? सो लेट्स स्टार्ट विद इट। और मैंने जो मटेरियल लिखा है वो मैंने एमएच अब्राहम और रूटलेज से लिया है, राइट? तो प्लीज अपने अपने नोट्स बनाते जाओ ताकि आपको ये बेनिफिशियल जो है वीडियो जो है वो आपके लिए और ज्यादा हेल्पफुल रहे और नेक्स्ट के एग्जाम्स में आपको help आए, right? And please share with your friends. So let's start. Now, what is allegory? Allegory is a narration or description in which events, action, character, setting or object that represent specific abstraction or idea, वो कोई एक abstract चीज या ideas को represent करते हुए चीज है जिसको हम allegory बोलते हैं, right? It can be anything, it can be event, it can be action, it can be characters or setting, right? Or even an object. Derivation. The word allegory comes from the Latin word allegoria, which means simply speaking to imply something else. Purpose. What is the purpose of using allegory? They are used to teach lesson, explain moral concept, and show the author's view on a certain situation. Uses of allegories is to convey hidden or the complex meaning through symbolic figure, action, imageries, or event which together create the moral, spiritual, or political meaning the author wishes to convey. वो कोई hidden meaning आपको बताना जब चाहता है तो वो इन चीजों के थ्रू, एक्शन, इमेजरी या इवेंट्स के थ्रू सिंबलाइज करके आपको वो बताता है और वो जो चीजें हैं वो मॉरल, स्पिरिचुअल और पॉलिटिकल मीनिंग बताते हैं, राइट? Next one is allegory is a distinguished feature. Allegory का distinguished feature क्या है? That it is a structure rather than textual symbolism. It is a large-scale exposition in which problems are conceptualized and analyzed into their constituent part in order to be stated, if not solved. Now, allegory and metaphor. Allegories are similar to metaphor in that both illustrate an idea by making a comparison to something else. However, allegories are complete stories with character, while metaphors are brief figure of speech. जो allegory होती है वो पूरी चीज को पिक्चराइज करती है, बट metaphor है जो कहीं कहीं पर दिखाई देता है। एक्सटेंडेड मेटाफर, जो एलेगरी होती है उसको हम एक्सटेंडेड मेटाफर भी बोलते हैं। इट इज ऑफन डिफाइंड एज एक्सटेंडेड मेटाफर इन विच कैरेक्टर्स, एक्शन एंड सीनरीज आर सिस्टमैटिकली सिंबॉलिक, रेफरिंग टू द स्पिरिचुअल, पॉलिटिकल, साइकोलॉजिक कन्फ्रंटेशंस। जैसे बनियंस पिलग्रिम प्रोग्रेस, ये आप प्लीज याद रखिए, जो बनियंस पिलग्रिम प्रोग्रेस है वो एक एलेगरी है, या फिर अगर ऑप्शन आता है एक्सटेंडेड मेटाफर तो वो उसको भी आप बोल सकते हो। अदर देन दैट, ऑरवेल्स 1984। टाइप्स क्या है? पहले आगे क्लासिकल एलेगरी। एलेगरी स्टोरीज told in the classical Grecian times about the animals and other things to demonstrate human existence and teach the people a lesson, right? One of the best example इसमें कौन सा आ जाएगा? प्लेटो की Allegory of the Cave। क्लासिकल Allegory अगर आती है तो उसमें प्लेटो का Allegory of the Cave आएगा। नेक्स्ट जो है वो बिब्लिकल Allegory है, that shows story used in the Bible to convey Christian teaching. These stories often evoke biblical themes such as conflict between evil and God. फिर medieval allegory आ जाता है जिसमें आता है representation of stories such as unity of Christianity. And modern allegory क्या आएगा? Modern allegory includes stories of animal, birds to depict modern themes, right? Like Animal Farm या Chronicles of Narnia, right? जहां पर जो एनिमल्स और बर्ड्स के थ्रू स्टोरी डिपिक्ट की जाती है।
अब द एलेगरी ऑफ द केव मैंने आपको पहले भी बताया है, ये एक आ जाएगी। इसके अलावा लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज बाय विलियम गोल्डिंग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये दोनों, प्लीज इसको याद रखना। नाउ Plato's Allegory of the Cave is considered a classical allegory and a fundamental text in the classical literature. और जो लॉर्ड ऑफ फ्लाइज है विलियम गोल्डिंग की, it is an allegory for conflicting human desire for civilization and for power. Animal Farm is an allegory as well as a dystopian novel. इसको हम डायस्टोपियन नॉवल भी बोलते हैं और एलेगरी भी बोलते हैं। जॉर्ज ऑरवेल का एनिमल फार्म, इन दिस एनिमल फार्म में, in this farm fable, animals runs a society that divides into faction and mirrors the rise of Leon Trotsky and the Russian Revolution. The story can be read as a fable of the farm animal running a society, right? और इसमें it can be interpreted as the author's criticism of communism. अब स्पेंसर के जो फेरारी क्वीन है वो भी क्या है, एलेगरी है, ठीक है। ये एक इंग्लिश एपिक है जो 1590 में लिखी गई थी और स्पेंसरियन स्टांजा है इसमें, राइट। और ये जो पोएम है was widely read as a commentary on the reign of Queen Elizabeth I. It fuses moral, religious, historical and political allegory in various romance. फिर स्कारलेट लेटर अमेरिकन नॉवल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नाथियल हार्थ्रॉन का, ठीक है। ये 1600 में सेट इन है, बट ये पब्लिश कब हुआ था, 1800 में। जो इसकी सेटिंग है वो 1600 की है। हेस्टर पायरनी इज फोर्स्ड टू अंडरगो पब्लिक ह्यूमिलेशन इंक्लूडिंग वेयरिंग द स्कारलेट लेटर ए के जिसका रिप्रेजेंटेशन है अडल्टरस, आफ्टर शी बिकम प्रेग्नेंट आउट ऑफ वेडलॉक। The Scarlet Letter is itself an allegory representation. किस चीज का रिप्रेजेंटेशन है, sin का, and how the society punishes it, right? और ये हिपोक्रेसी को दिखाता है। फिर एसोफेबल है जो, एक्चुअली ये क्या है एसोफेबल? It is a part of an oral tradition in the ancient Greece and accredited to an ancient Greek slave named Aesop. They are the collections of fable. ये fables का collection है, इनको हम allegory भी कहते हैं, right? Often aimed at children that offer guidance on a wide variety of social, political and religious topics. ठीक है? It is allegory in the form of instructive lessons. ठीक है? Instruction है, lesson है to teach the children. ठीक है? Children को teach करता है कि हमें कैसे behave करना चाहिए और कैसे values होने चाहिए हमारे। So this was all for today's video. I hope you like it. Please subscribe and share. Thank you.